So today we will see about the strain improvement. Last time we have seen in the MB402 topic, we have seen the screening. There are two types of screening procedure: primary screening procedure and a secondary screening procedure. In the primary screening procedure, we have seen the screening of antibiotic producers by the crowded plate technique, then screening of the amino acid and vitamin producers by the oxanographic technique, then secondary screening, importance of secondary screening, number of characteristics of secondary screening. Secondary screening gives the more useful information. It is the systematic screening program. It gives the exact idea about the economic position of fermentation product, real product having the real commercial value, optimum condition for the growth and accumulation of product. These are determined by the secondary screening. Now next, we have seen the method of secondary screening, that is the giant colony technique. Now today we will see strain improvement. So what is meant by strain improvement? uh, Organism which produces industrial fermentation processes or product, that organism should be uh, it should be efficient to produce large amount of product. Industrial fermentation process should be more and more economical, and for that more economical process, the production of the product should be in more quantity. And for the production of the product, if the wild strain is used, wild strain, that is the strain which is isolated from the soil or strain which is isolated from air, water or any other source, if the strain is used, that strain may produce low quantity of commercially important product. The strain may be produced, wild strain may be produced low quantity of commercial important product. So there is a use of high yielding strain in fermentation process मध्ये high product yielding strain should be used. And that strain, if it is not giving high product, then that strain should be uh, improved. That is, the strain improvement program should be carried out on that strain. So newly isolated strain obtained by the screening technique, if it is not efficient for use in industrial fermentation, then such a strain which is not efficient strain, it requires the improvement. What is strain improvement? Wild strain which is isolated from the soil or from any other sources, if that strain is not giving proper fermentation product, if it is not giving much more fermentation product in large quantity, then what you have to do, you have to improve that strain. So that strain is improved by the strain improvement program, so that the particular desired product is obtained in high quantity. The potentiality of the product formation is generally determined by improving the strain of the fermentation product. So therefore genetic improvement is carried out in the strain. Genetic improvement of the wild strain is carried out, so that the new strain is developed, and that new strain produces the desired product in very large manner, in a cost effective means, in low media it produces high quantity of product. जे पण स्ट्रेन आपण इंडस्ट्रियल फर्मेंटेशन करण्यासाठी वापरणार आहोत, जर ते स्ट्रेन जास्त क्वांटिटीवरती प्रॉडक्ट देत नसेल, इफ द स्ट्रेन इज नॉट गिव्हिंग हाय अमाऊंट ऑफ यील्ड, देन यू हॅव टू इम्प्रूव्ह दॅट स्ट्रेन. त्या स्ट्रेनला इम्प्रूव्ह करायचं. हाऊ टू इम्प्रूव्ह दॅट स्ट्रेन? दॅट स्ट्रेन इज इम्प्रूव्ड बाय जेनेटिक मॉडिफिकेशन or genetic improvement or genetic modification of that strain. Genetic modification involves the increase in the product formation by the cost effective manner. So there are two methods of the strain improvement. First method is mutation and second method is the recombinant DNA technology. So first method is mutation. Any change that occur in the DNA of a gene is referred as a mutation. What is mutation? Mutation is change in the DNA of the gene.
DNA सिक्वेन्समध्ये एखाद्या जीनच्या DNA सिक्वेन्समध्ये चेंज करायचा, सो दॅट this process is known as mutation. Mutation you are going to study in the paper of genetics also. What is mutation? Mutation is change in the DNA sequence of the gene किंवा क्रोमोझोम किंवा जीनवरचा DNA सिक्वेन्स चेंज करायचा. Mutation results in the structural change in the genome, so that there is a structural change in the genome मध्ये चेंज होणार आहे, so that change genome is able to produce more quantity of product. So mutations may be spontaneous or induced mutation. The spontaneous mutation occur in very low frequency and are not suitable for industrial purpose. So mutations are induced by the mutagenic agent. Mutagenic agents are used to induce the mutation. So such a mutagenic agent include use of UV light. UV light causes mutation in the organism. Then various chemicals. Various chemicals include nitrous oxide, not nitrous acid. It is a nitrous oxide. Oxides of the nitric acid. Nitrous oxides, nitrosoguanidine, nitrosoguanidine and hydroxylamine. These are the compounds or chemicals which are used for the strain improvement. Nitrous oxide, nitrosoguanidines and hydroxylamines. So what is mutation? Mutation is a change in the sequence of DNA. Change in the sequence of DNA which occurs but DNA sequence get changed which occurs in the gene, and so that the whole genome, there is a structural change in the whole genome, and that when the whole genome is changed, the desired product can be produced in लार्ज क्वांटिटी. मग आपण काय करायचं की आपल्याला जे प्रॉडक्ट जास्त क्वांटिटीवरती पाहिजे तसे चेंजेस करायचे त्या जिनोममध्ये, सो दॅट दॅट जिनोम गेट चेंज अँड इट प्रोड्युसेस लार्ज अमाऊंट ऑफ प्रोडक्ट. So the spontaneous mutation occur. There are two types of mutations, spontaneous and induced. So spontaneous mutation occur at a very low frequency and not suitable for industrial purpose, but induced mutation is very suitable for industrial purposes. Induced mutation can be induced by mutagenic agents such as UV light, various chemicals like nitrous oxide or nitrosoguanidines or hydroxylamine compounds. Then next is the genetic recombination or recombinant DNA technology. So the strain improvement can be made by combining genetic information from two genotype. दोन जीनोटाईपची जेनेटिक इन्फॉर्मेशन एकत्र करायची. स्ट्रेन इम्प्रूव्हमेंट कॅन बी मेड बाय कंबायनिंग genetic information from two genotypes by the process of genetic recombination. दोन जिनोम, वेगवेगळ्या ऑर्गेनिझमचे दोन जिनोम, एग्जाम्पल इकोलाई का एक जीन और दूसरा जीन जो है वो सैल्मोनेला टाइफी का, नहीं तो फिर दूसरा जीन जो है लैक्टोबैसिलस का. सो दो जीन्स ऑफ द टू डिफरेंट ऑर्गेनिज्म, they are combined by the process called as a genetic recombination. So two different genotypes are combined by the process of genetic recombination. The recombination can be brought about by transformation, transduction, conjugation and protoplasm fusion. Recombination can be brought by the program of transformation, transduction, conjugation and protoplasm fusion. So advantages, what are the advantages of genetic recombination? By crossing high product yielding mutant strain with the wild strain, the fermentation process can be further increased. By crossing high product yielding mutant strain, जो स्ट्रेन ज़्यादा प्रोडक्ट दे रही है, म्यूटेशन करके जो स्ट्रेन ज़्यादा प्रोडक्ट दे रही है, उस स्ट्रेन का वाइल्ड स्ट्रेन के साथ रिकॉम्बिनेशन करने का, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन करने का, सो दैट बोथ द स्ट्रेन्स विल प्रोड्यूस, न्यू स्ट्रेन विल बी फॉर्म एंड न्यू स्ट्रेन विल प्रोड्यूस मोर अमाउंट ऑफ fermentation product. The genes from the wild strain and genes from the high product yielding mutant strain, that two strains are combined to produce more product. The different mutant strains with the high yielding properties, they can be combined by recombination. Otherwise अगर वहाँ पे दो चार ज़्यादा हाई यील्डिंग स्ट्रेन है तो वो हाई यील्डिंग स्ट्रेन
कंबाइन करने हैं और वो कंबाइन करके रिकॉम्बिनेशन करके कंबाइन करके उससे नई स्ट्रेन प्रोड्यूस होगी. दैट स्ट्रेन, न्यू स्ट्रेन विल बी द म्यूटेंट स्ट्रेन एंड दैट स्ट्रेन विल प्रोड्यूस more amount of product. So there are two methods for the for the strain improvement. First is the mutation and second is genetic recombination. The next topic is the culture collection centers. Culture collection centers are the centers which provide authentic culture. अभी कल्चर कलेक्शन सेंटर में क्या है कि बहुत सारे कल्चर्स उन्होंने प्रिजर्व करके रखे हैं. There are thousands and thousands of the species which are preserved in the culture collection centers. 8-10 हजार नहीं तो 50,000 तक स्पेसीज रहती है जो कल्चर कलेक्शन सेंटर में प्रिजर्व करके रखा जाता है. तो अगर वो उनको प्रिजर्व किया तो क्या है कि वो इंडस्ट्रियल पर्पस के लिए वो कल्चर्स प्रोवाइड करते हैं. Culture collection centers provide authentic culture. Authentic culture means the culture which is producing the product. Example, citric acid. Citric acid is produced by the organism. So the citric acid producing organism can be preserved now in the culture collection center. Or vinegar. Vinegar is one of the industrial product. So vinegar producing strains are preserved in the culture collection center. So what is the role of culture collection center? Culture collection center provide authentic cultures, often microorganism or sometime plant cell culture or animal cell culture. सेल कल्चर मीन्स वो उसका एक खाली एक टिश्यू का सेल्स रहता है, उसको प्रिजर्व किया जाता है एनिमल और प्लांट्स में. और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एज ए होल दे आर प्रिजर्व्ड एंड ग्रोन एंड मेंटेन इन द लेबोरेटरी. लैब में मेंटेन करके रखते हैं. हम भी हमारे लैब में कल्चर्स मेंटेन करते हैं, नहीं तो फिर हम प्रैक्टिकल के लिए आपको कल्चर्स नहीं दे सकते. तो हम वो कल्चर्स कहाँ मेंटेन करते हैं, कल्चर्स को प्रिजर्व करते हैं और वो कल्चर्स हम फ्रिज में मेंटेन करके रखते हैं. तो कल्चर कलेक्शन सेंटर का रोल क्या है कि कल्चर को ग्रो करना है और उनको मेंटेन करके रखना है लैब में, सो दैट इफ एनी पर्सन विल नीड दैट कल्चर, वो कल्चर उनको प्रोवाइड करना. अगर इंडस्ट्रियल पर्पज है तो उसका चार्जेस ज़्यादा है. अगर एजुकेशनल पर्पज है, कॉलेज है और स्कूल है, और अगर कॉलेज है और अगर कोई इंस्टीट्यूट है, नेशनल इंस्टीट्यूट है और वहाँ पे कुछ इम्पोर्टेंट वर्क चल रहा है, तो उनके लिए कल्चर जो है कम रेट में देना है. और जो इंडस्ट्रियल पर्पज है जहाँ पे ज़्यादा प्रोडक्ट लिया जाएगा और प्रोडक्ट को सेल किया जाएगा, तो उसमें से अगर वो इनकम ले रहे हैं, कुछ प्रॉफिट ले रहे हैं, तो वहाँ पे वो कल्चर जो है वो कम ज़्यादा क्वांटिटी में वो बेचते हैं. तो व्हाट इज द रोल ऑफ कल्चर कलेक्शन सेंटर? टू मेंटेन और प्रिजर्व द कल्चर एंड प्रोवाइड टू द needy person who need it. Either industrialist will need it, or either education purpose will need the culture, or either a national institute will need the culture. That culture is provided on the basis of the charges are given. Specific charges are for the culture, and that charges, when we paid that charges, then we will get culture. So which are the culture collection centers in India? In India, there are near about 27 culture collection centers are registered with WDCM, that is the World Data Collection of Microorganisms. So 27 different culture collection centers are there in India, but only few out of the 27 provide regular services to the scientific community. तीन ओनली प्रोवाइड रेगुलर सर्विसेज टू द साइंटिफिक कम्युनिटी. उसमें से 2-4 ही ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस है और सेंटर्स है जो कल्चर प्रोवाइड करते हैं. सो मेजर अमंग देम आर द माइक्रोबियल कल्चर कलेक्शन MCC पुणे, माइक्रोबियल कल्चर कलेक्शन सेंटर पुणे, देन माइक्रोबियल टाइप कल्चर कलेक्शन चंडीगढ़, उसका नाम क्या है, इंस्टीट्यूट ऑफ माइक्रोबियल टेक्नोलॉजी चंडीगढ़. तो फर्स्ट इज माइक्रोबियल कल्चर कलेक्शन, उसका पहले नाम
क्या था? नेशनल कलेक्शन ऑफ इंडस्ट्रियल माइक्रो ऑर्गेनिज्म, नेशनल कलेक्शन ऑफ इंडस्ट्रियल माइक्रो ऑर्गेनिज्म which is now named as a microbial culture collection MCC, which is located in the Pune. Then microbial type culture collection, that is it is located in Chandigarh. Then national fungal culture collection of India, which is located in Pune. Then national collection of industrial microorganism, Pune. Then agriculturally important National Bureau of Microorganism and National Collection of Dairy Cultures, Karnal, India. What is name? Agriculturally important National Bureau of Microorganisms and National Collection of Dairy Cultures, Karnal, India. Out of that, MCC and MTCC, these are recognized as a means these are the recognized institutes. Indian Depository Authority means depository authority means वो कल्चर, अगर हमने कोई नया ऑर्गेनिज्म सर्च किया है, अगर तुमने SYBSc के स्टूडेंट ने कोई एक नया ऑर्गेनिज्म सर्च किया, तो अगर वो ऑर्गेनिज्म आपको डिपॉजिट करना है तो वो डिपॉजिट भी करते हैं, आपका ऑर्गेनिज्म वहां पे डिपॉजिट भी होगा, और अगर आपको वहां से ऑर्गेनिज्म चाहिए, दूसरा वाला चाहिए, तो आपको वहां से दूसरा ऑर्गेनिज्म मिलेगा भी. सो इट इज द इंडियन डिपॉजिटरी अथॉरिटीज मीन्स उसको डिपॉजिटरी अथॉरिटी है वो, जहाँ पे कल्चर्स डिपॉजिट भी कर सकते हैं हम, और वहां से हम कल्चर्स ले भी सकते हैं. सो विच आर डिफरेंट कल्चर कलेक्शंस? In India, there are 27 culture collection centers are there, which are registered under the World Data Collection of Microorganism. World Data Collection of Microorganism have given registration for that culture collection center. But out of that 27, only few of that provide regular services, means only few culture collection center gives the culture to the scientific community. अगर किसको चाहिए तो वहां से कल्चर मिल सकता है. कहाँ से? जो 2-4 इंस्टीट्यूट है वहां से. तो कौन से है वो इंस्टीट्यूट? मेजर दीज आर द माइक्रोबियल कल्चर कलेक्शन, MCC पुणे. सेकेंड, माइक्रोबियल टाइप कल्चर कलेक्शन, MTCC चंडीगढ़. ओ MTCC कहाँ है? इंस्टीट्यूट ऑफ माइक्रोबियल टेक्नोलॉजी, IMTech मीन्स इंस्टीट्यूट ऑफ माइक्रोबियल टेक्नोलॉजी चंडीगढ़. देन नेशनल फंगल कल्चर कलेक्शन, नेशनल फंगल कल्चर कलेक्शन ऑफ इंडिया, पुणे. पुणे में है फंगल कल्चर कलेक्शन सेंटर. देन नेशनल कलेक्शन ऑफ इंडस्ट्रियल माइक्रो ऑर्गेनिज्म, पुणे. वो कहाँ पे है? NCL जो है नेशनल केमिकल लेबोरेटरी, उसमें ये नेशनल कलेक्शन ऑफ इंडस्ट्रियल माइक्रो ऑर्गेनिज्म, दैट इज द NCIM, इज लोकेटेड इन NCL. Like this way, microbial type culture collection is located in IMTech Chandigarh. Then agriculturally important National Bureau of Microorganisms and National Dairy Collection, National Collection of Dairy Cultures. Dairy Cultures कहाँ से मिलते हैं? करनाल, हाँ, पंजाब हरियाणा, वहां से करनाल से ये इंस्टीट्यूट है, वहां से हमको एक कल्चर मिल सकते हैं. एंड बोथ MCC एंड MTCC, दीज आर द डिपोजिटरी अथॉरिटीज, दे आर द डिपोजिटरी सेंटर्स ऑल्सो. डिपोजिटरी मीन्स अगर न्यू ऑर्गेनिज्म इज आइसोलेटेड बाय अस, वी कैन डिपोजिट इट इन दैट इंस्टीट्यूट एंड दे कैन प्रिजर्व दैट ऑर्गेनिज्म. वो प्रिजर्व करके रखते हैं. सो इट इज द डिपोजिटरी इंस्टीट्यूट ऑल्सो. Microbial culture collection, see here, now called as a National Center for Microbial Resources. उसका नया नाम क्या है? NCMR, National Center for Microbial Resources in Pune. In India's Microbial Culture Collection Center recognized by World Federation of Culture Collection. उसको किसका recognition है? World Federation of Culture Collection, WFCC, and has a status of International Depository Authority. International Depository Authority. Not Indian, it is the International Depository Authority. म्हणजे काय आहे की त्याच्यामध्ये आपण कल्चर डिपॉझिट पण करू शकतो, आणि इंटरनॅशनल डिपॉझिटरी ऑथॉरिटी आहे म्हणजे त्याच्यामध्ये ऑल ओव्हर वर्ल्डचे लोक पण त्याच्यात कल्चर डिपॉझिट करू शकतात.
So it is the International Depository Authority, that is Microbial Culture Collection, which is also called as NCMR, National Collection for Microbial Resources. Okay, the microbial culture collection is national facility. It is funded by the Department of Biotechnology, Government of India. It is affiliated to the National Collection, National Center for Cell Science. वो कहाँ पे है? It is located in the National Center for Cell Science, NCCS, पुणे. पुणे में है वो ये भी MCC, that is NCMR, which is located in Pune. Then the main objectives of the MCC are to act as a national depository, to supply authentic microbial cultures, to provide related services to the scientific community working in the research institution, universities and industries. The MCC scientists are actively involved in the research program relating to the microbial diversity, metagenomics, ecology and taxonomy using both classical and molecular approaches. वो वहाँ पे जो साइंटिस्ट है वो क्या करते हैं, रिसर्च प्रोग्राम रिलेटिंग टू द माइक्रोबियल डाइवर्सिटी, वहाँ अलग अलग टाइप के ऑर्गेनिज्म जो है कलेक्ट किए जाते हैं, उनका मेटाजीनोमिक्स मीन्स उनका जीनोमिक्स जीन लेवल पे स्टडी होता है, उनका टैक्सोनॉमिक पोजीशन, इकोलॉजिकल पोजीशन सब स्टडी होता है. कहाँ पे? NCIM, NCCAS, that is the NCMR, National Collection of in the National Collection of Microbial Resources, National Center for Microbial Resources, Pune, which is National Collection of Microorganism. It is the or depository which collect organism and which provide organism to the scientific community. Its name is National Center for Microbial Resources, that is the NCMR, which is also known as the Microbial Culture Collection, that is MCC, which is located in NCCS, National Center for Cell Science, Pune. Okay. Then next is National Collection of Industrial Microorganism. National Collection of Industrial Microorganism is a national facility and microbial culture repository dedicated to isolation, preservation and distribution of authentic and industrially important microbial strains. It is established in 1951. When it is established, it is established in 1951. NCIM is the oldest biological resource center. Biological resource center means it is the old biological culture collection center holding especially industrially important microorganism in the country. बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स एनसीआईएम में है. नियर अबाउट more than 5,000 to 10,000 of bacteria, fungi, actinomycete, yeast and algae. These are present in the NCIM. In addition, NCIM provide extensive documentation and detailed identification information on the biological material. They provide extensive documentation, cultureचं documentation, त्याचं आयडेंटिफिकेशन सगळे डिटेल त्यांनी मेंटेन करून ठेवलेले. इट प्रोव्हाइड द proper documentation, detailed identification information on the biological materials which we are purchasing from the NCIM. Only non-pathogenic cultures are maintained in the culture collection center. फक्त नॉन पॅथोजेनिक ऑर्गॅनिझम जे आहेत तेच मेंटेन केलेले आहेत, पॅथोजेनिक ऑर्गॅनिझम मेंटेन केलेले नाहीत. The diversity and quality management of its bioresources render the NCIM an internationally known supplier for science, pharmaceutical laboratories, national reference center, as well as industrial partners. The diversity and quality management of its bioresources, जे पण त्यांनी ऑर्गॅनिझम मेंटेन करून ठेवलेले त्याच्यामुळे त्यांचं नाव हे जगामध्ये प्रसिद्ध आहे. National Collection of Industrial Microorganism. This is famous internationally for the supply of culture, for the maintenance of culture, to the science, to the pharmaceutical laboratories, to the national reference centers, as well as for the industrial purpose. They provide the culture. What is the culture collection name? National Collection of Industrial Microorganism, NCIM. That is the national facility. This is the old
कल्चर कलेक्शन सेंटर ऑफ इंडिया. इंडियातलं एकदम ओल्ड कल्चर कलेक्शन सेंटर आहे. 1951 पासून त्याची स्थापना झालेली आहे. ओके. Then next is the ATCC, that is American Type Culture Collection. So this is non-profit organization which collects, stores and distributes standard reference microorganism, cell line and other material for research and development. ATCC is the American Type Culture Collection Center. This is again one of the non-profit organization which collect, store, distribute standard reference of the reference microorganism, standard reference microorganism provide करतो. कोणतं? ATCC, that is the American Type Culture Collection Center. This is established in 1925. म्हणजे NCIMच्या अगोदर याचं एस्टॅब्लिशमेंट झालेलं आहे. In 1925 serve as the National Center for Depositing and Distributing Microbiological Specimen. काय करतं? It is the National Center for Depositing and Distributing Microbiological Specimen. ATCC has since known to distribute cultures over 150 different countries. 150 कंट्रीला ते कल्चर प्रोव्हाइड करतं. American Type Culture Collection Center, and it is now largest general culture collection center in world मधलं largest culture collection center आहे. कोणतं? अमेरिकन टाईप कल्चर कलेक्शन सेंटर. कोणते कोणते कल्चर कलेक्शन सेंटर आपण पाहिले? पहिलं मायक्रोबियल टाईप कल्चर कलेक्शन सेंटर चंदीगड. देन सेकंड MCC, that is the Microbial Culture Collection, which is also known as National NCMR, National Collection of Microbial Resources, NCMR, which is located in NCCS Pune. Then third, National Collection of Industrial Microorganism, that is the NCIM, which is located into the NCL Pune. And fourth one is ATCC, that is the American Type Culture Collection Center, present in America, which provide culture to 150 different countries of the world. So next is the preservation of microbial cultures. Next topic is preservation of microbial cultures. So how to preserve the microbial cultures? So preservations of microbial culture, this is how to preserve the organisms in the laboratory. आपण पण आपल्या लॅब मध्ये ऑर्गॅनिझम प्रिझर्व करू शकतो. This process is known as preservation of culture, process by which cultures are preserved in the laboratory. Isolation, preservation and detection of industrially useful microorganism. This is the time consuming and expensive process. So it is essential to keep the isolated organism in the viable condition. जे ऑर्गॅनिझम आपल्याला डिझायर्ड प्रॉडक्ट देत आहेत त्या ऑर्गॅनिझमला आपल्या लॅबमध्ये मेंटेन करून ठेवायचं. मेंटेन करून ठेवायचं म्हणजे आपल्याला परत परत त्याचं आयसोलेशन करावं लागणार नाही, परत परत त्याचे बायोकेमिकल कॅरेक्टर स्टडी करावे लागणार नाही. जे कल्चर आपल्याला हाय क्वांटिटी डिझायर्ड प्रॉडक्ट देतं त्या कल्चरला आपल्या लॅबमध्ये आपण प्रिझर्व करून ठेवू शकतो. So this process of maintaining organism in the laboratory
is known as the preservation of microbial culture, and we can use that culture for the long period of time. आपण लॉंग पिरियड पर्यंत ते कल्चर मेंटेन केलेले यूज करू शकतो. अँड दॅट कल्चर रिमेन इन व्हायबल कंडिशन. व्हायबल कंडिशन म्हणजे जिवंत कंडिशन मध्ये, लाइव कंडिशन में ऑर्गेनिज्म लॉन्ग पीरियड के लिए लैब में हम मेंटेन कर सकते हैं. सो दिस मेंटेनेंस ऑफ कल्चर इन द लाइव कंडीशन इन द लेबोरेटरी, दिस प्रोसेस इज नोन एज द प्रिजर्वेशन ऑफ माइक्रोबियल कल्चर. ये प्रोसेस के लिए को क्या बोलते हैं? प्रिजर्वेशन ऑफ माइक्रोबियल कल्चर्स. So why, what is the importance of preservation of culture? There are the three basic aim in maintaining and preserving the microorganism. These are to maintain the viability of culture. Culture की viability रहनी चाहिए. नहीं तो अगर हमने एखादी फर्मेंटेशन प्रोसेस की और अगर हमारा कल्चर उसके बाद फर्मेंटेशन प्रोसेस के बाद डेड हो गया, तो हमको वापस फर्मेंटेशन प्रोसेस करने के लिए कल्चर को आइसोलेट करना पड़ेगा. उसके बायोकेमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स स्टडी करने पड़ेंगे. बायोकेमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स हम स्टडी करेंगे, उसके बाद ही हम हमारा कल्चर हम यूज कर सकते हैं. Okay, so there are three basic aims in maintaining and preserving the microorganism. They are uh, to maintain the viability of culture, to maintain the viability of culture, to maintain the original characteristics of culture, to keep the culture uncontaminated, contamination उसमें नहीं होना चाहिए, to keep healthy as possible both physically and physiologically, preserving their original properties. कल्चर की ओरिजिनल प्रॉपर्टी जो है वो प्रिजर्व करनी चाहिए, वो प्रिजर्व होनी चाहिए until they are deposited in major culture collection center, to have the adequate stock and appropriate systems for replenishing stock when necessary. कल्चर्स का स्टॉक ज़्यादा होना चाहिए. अगर कल्चर कम हो गया तो कम हो गया तो फिर हम स्टॉक में से वापस वो कल्चर हम वापस उसको उसके ज़्यादा कल्चर्स बना सकते हैं. तो उसका एडिक्वेट होना चाहिए. अगर एक स्लैंट है तो एक स्लैंट में से हम कितने स्लैंट बनाएंगे? 10 स्लैंट बनाएंगे. लेकिन अपने पास अगर 10 स्लैंट है कल्चर के, तो 10 में से हम 100 स्लैंट्स बना सकते हैं. So that we have to prepare the large quantity of that culture. So we have the adequate stock of that culture to replenish. Replenish means हम उससे ज़्यादा quantity produce कर सकते हैं. So what are that basic aims for maintaining the and preserving the culture? टू मेंटेन द वायबिलिटी ऑफ कल्चर. कल्चर वायबल कंडीशन में लॉन्ग टाइम के लिए ग्रो रहना चाहिए. अगर डेड हो गया तो हमको वापस कल्चर लगेगा. देखो हम घर में क्या करते हैं, कर्ड सैंपल आपको पता है. जब हमको कर्ड बनाना रहता है तो हम क्या करते हैं कि अपना जो पुराना वाला कर्ड है वो कर्ड थोड़ा सा रख देते हैं फ्रिज में. क्यों रख देते हैं कर्ड को फ्रिज में? अगर हम वो कर्ड सैंपल थोड़ा सा प्रिजर्व करते हैं तो कर्ड सैंपल में जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, हम जब नेक्स्ट ज़्यादा अपने पास मिल्क है तो हम वो मिल्क में अगर वो कर्ड सैंपल थोड़ा सा कर्ड सैंपल ऐड कर देते हैं तो वो मिल्क इज कन्वर्टेड टू कर्ड. हम जितना कर्ड चाहिए उतना यूज करके अगर हमको वापस दूसरा कर्ड बनाना है, दूसरा दही बनाना है, तो हम क्या करेंगे? वो पहले वाला जो दही है उसमें से थोड़ा सा दही निकाल लेंगे. उसको हम क्या बोलते हैं मराठी में? विरजन. विरजन और मुरवण भी बोलते उसको, और वो विरजन भी बोलते. तो वो जो है वो कर्ड सैंपल जो है, वो कर्ड सैंपल में माइक्रो ऑर्गेनिज्म रहते हैं, तो हम वो कर्ड सैंपल जो है प्रिजर्व करके रखते हैं. जो जैसे हम घर में कर्ड सैंपल को प्रिजर्व करते हैं नेक्स्ट कर्ड बनाने के लिए,
नेक्स्ट कड़ हमको बनाना है। कड़ अपने आप नहीं बन जाता। दूध है, दूध को हम जब वो सैंपल उसमें ऐड करते हैं, कड़ सैंपल ऐड करते हैं, तो दैट मिल्क इज कन्वर्टेड टू कड़। सो दैट इज द प्रॉपर प्रोसीजर फॉर कर्ड मेकिंग। अगर वो फट जाता है, अपने आप नेचुरली फट जाता है, तो दैट फटा हुआ मिल्क जो है दैट इज नॉट ए कर्ड। जो हम कर्ड सैंपल उसमें ऐड करते हैं मिल्क में, तो उसका उसके बाद उसका कर्ड बनता है। तो हम वहाँ पे कर्ड सैंपल प्रिजर्व करके रखते हैं। तो लाइक दिस वे वी आर प्रिजर्विंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन वायबल कंडीशन। वायबल कंडीशन मीन्स इन अ लाइव कंडीशन वी मेंटेन ऑर्गेनिज्म इन द लेबोरेटरी। वी मेंटेन द ओरिजिनल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द कल्चर। उसके ओरिजिनल कैरेक्टर्स हम मेंटेन करते हैं। कल्चर्स अनकंटामिनेटेड कंडीशन में मेंटेन करते हैं। अनकंटामिनेटेड मीन्स उसमें दूसरे ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ नहीं होती, प्योर कल्चर रहता है। सो दैट प्योर कल्चर कैन बी यूज फॉर द इंडस्ट्रियल पर्पज। अगर हमने 4-5 दूसरे अनकंटामिनेटेड कंटामिनेटेड कल्चर उसमें ऐड कर दिए अनकंटामिनेटेड कल्चर में, तो क्या हो जाएगा, ऑर्गेनिज्म विल प्रोड्यूस इट्स ओन ग्रोथ। जो ऑर्गेनिज्म है उसका उसका ग्रो करे होगा और उसका प्रोडक्ट तैयार होगा। हमको 4-5 ऑर्गेनिज्म में से एक भी प्रोडक्ट नहीं मिलेगा फाइनली। So we have to inoculate single organism into the fermentation process, so that single organism will carry out the process and will give the product, final product. Then we have to maintain the healthy organism, so that healthy organism in physically and physiological condition it have its original properties, so that that organism can be deposited in the culture collection center. Then to have the adequate stock of the culture को ज़्यादा quantity में हमने maintain करना है, so that when we required we can collect that culture from the stock of our culture. So there are the two methods for the preservation of microorganism. That two methods are the continuous metabolic state, method in continuous metabolic active state, and method in suspended metabolic state. दो मेथड कौन सी है, इन कंटिन्यूस मेटाबॉलिक स्टेट, मेटाबॉलिक एक्टिव स्टेट, एंड इन सस्पेंडेड मेटाबॉलिक स्टेट। कंटिन्यूस मेटाबॉलिक स्टेट में क्या है कि ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ जो है कंटिन्यूस मैनर में चलती है। दैट इज द मेथड ऑफ द कंटिन्यूस मेटाबॉलिक स्टेट। मेटाबॉलिकली ऑर्गेनिज्म एक्टिव स्टेट में रहता है, दैट इज द मेथड्स इन कंटिन्यूस मेटाबॉलिक एक्टिव स्टेट। एंड मेथड इन सस्पेंडेड मेटाबॉलिक, सस्पेंडेड मेटाबॉलिज्म में क्या है कि ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ है वो ग्रोथ सस्पेंड हो जाती है। कोणत्या दोन मेथड आहे, मेथड इन विच कंटिन्युअस मेटाबॉलिक ऍक्टिव्ह स्टेट, कंटिन्युअस मेटाबॉलिक ऍक्टिव्ह म्हणजे ऑर्गॅनिझम हे कंटिन्युअसली मेटाबॉलिकली ऍक्टिव्ह फॉर्म मध्ये राहतील, आणि दुसरी जी मेथड आहे ती सस्पेंडेड मेटाबॉलिक म्हणजे ऑर्गॅनिझमची ग्रोथ होणार नाही पण ऑर्गॅनिझम जिवंत राहतील. That is the suspended metabolic state. So these are the two states where organism can be maintained for the long period of time. So this continuous metabolism and suspended metabolism we will see in the next lecture. Okay. So we will see the two methods, that is the method in continuous metabolic state and method in suspended metabolic state, in the next lecture.